सर मैं फेसबुक पे लाइव कर रही हूँ, बस 1 मिनट दीजिए। Okay, so good afternoon, everyone. I, Dr. Sakshi, General Secretary, DHMA, welcome you all to the CME of month May 2022. These monthly CMEs, they have been regularly conducted by the association on every last Sunday of the month since it was established in 1932. Even COVID couldn't stop us, and the only change it brought us was we started meeting online, and it became more often. As post lockdown, DHMA conducted regular webinars and kept spreading the word about homeopathy by bringing to you eminent speakers who are working day and night to serve the homeopathy by way of our this noble profession. Similarly, the last webinar, which was conducted exclusively for the DHMA members on 8th of May, it was with Dr. Nishant Srivastava as the speaker, who enlightened us on the scope of homeopathy in cases of psoriasis. It was a huge success, and it attracted lots of appreciation and applause from many people. Since the association was established and registered in 1932 by Dr. Yudhvir Singh, making it the oldest and mother association of all homeopathic associations in Delhi. We have been regularly conducting monthly CMEs, health camps, and various other events. Dr. Yudhvir Singh was the first health minister of Delhi, the first chairman of Board of Homeopathic System of Medicine in Delhi, where he held the position from 1958 to 1969. He founded Nehru Homeopathic Medical College and various homeopathic charitable dispensaries in Delhi. So those who wish to join us, this esteemed organization, they may visit our website, which is www.dhma.in, or write to us at dhmadelhi@gmail.com, or contact us at 9711 So without much ado, I would now request our president, Dr. Shweta Singh ma'am, to please welcome everyone. Thank you, Dr. Sakshi, for the beautiful introduction of Delhi Homeopathic Medical Association. First of all, my sincere gratitude to our patron sir, Dr. VP Singh sir, and to all my executive members, and my greeting to our honorable speaker of the day, Dr. Niranjana Basu, who came up with a beautiful topic, New Insights in Homeopathy. She is one of our best professor who used to taught us surgery when we were in Baxan Homeopathic Medical College, and she used to be very strict, but at the same time she has a beautiful persona in the college and among the students and the faculty also. And now she's doing research in molecular homeopathy. Every day she makes us proud, the whole homeopathic fraternity proud with her whatever she is doing. And I'm very fortunate enough to got this opportunity to learn from her once again, and looking forward to a beautiful presentation from her side. Welcome to all the viewers. Stay tuned until the end of the webinar. Thank you. Over to you, Dr. Sakshi, and welcome, ma'am. So to begin with the proceedings, I would now like to introduce our guest speaker, Dr. Nilanjana Basu. Professor Dr. Nilanjana Basu is a consulting homeopath. She is the former Vice Principal, Baxan Homeopathic Medical College and Hospital at Greater Noida. She is currently pursuing PhD in Cellular and Molecular Oncology from Amity Institute of Molecular Medicine and Stem Cell Research, Uttar Pradesh. I welcome you, ma'am, on behalf of DHMA and the learners who have joined us today. I now again seek permission from our president to allow us to begin today's session regarding new insights on homeopathy.
Please, ma'am, kindly enlighten us with your lecture. Thank you, Sakshi. I am obliged and thankful to DHMA to again bring me forth to all the listeners and all the knowledgeable homeopaths. I see some senior homeopaths, Dr. VP Singh sir, namaste sir, Dr. Deepak Sharma and Dr. Shweta Singh. Yes, she's my student, but now she's a good doctor. she's making us proud all over. So, so for today's session, what I thought, let it be a little bit interactive. I talked to Dr. Shweta that maybe it will be a little bit interesting if we keep it interactive. And I think there's a small group, so we can do that. And before I start, I just want to mention few things that, being a homeopath, to be a homeopath, you need to be complete, what I feel. So completeness comes when you are into clinical practice. And for me, it was very important, like to know more, I should be teaching people. So if I teach people, I will try to know more and I learn more. So that's how I came into teaching basically. So I never thought of coming to teaching until and unless when I realized that I should be gaining knowledge. And so to gain knowledge, to teach, you have to know more than the students. So that brought me into it. So that so time passed away. बहुत साल हमने teaching किया उस वजह से. And then I realized that teaching is fine. You gain knowledge. But to know more about homeopathy and to do something for homeopathy, then you have to do some science with it. So science of homeopathy is not only clinical. The best thing of homeopathy is that we have already clinical knowledge, huge lot of clinical knowledge. And since the time of Hahnemann, we have lot of medicines which are already available, and it is giving, they give results. But the problem was always that how it works and what is the methodology of its working. That was also always in a question. How it works, kaise kaam karta hai? Matlab, that always bothered me. So research, clinical research, definitely it's very important. But as the days are passing, we also find a void in homeopathy that only clinical research will not work. It is a pseudoscience. So why it is pseudoscience when we know there is science in it? So we have to prove. So what I always thought that there is a gap, the gap between the language of science and language of homeopathy. So if we can bridge that gap, maybe that will be helpful to bring up the homeopathy. That void will be subsided, right? So that was my intention to switch over my career to research, though I did not leave my clinical practice, that is there. So that was my turning point. So if I know the language of science, and if I, being a homeopath, I know obviously the language of homeopathy, then we can understand both the things. And I'll share some of my insights. That's why I said new insights in homeopathy. That was my topic. I'll share some of my experience, which I gained as a homeopathy. We know, as a homeopath, we know, we read organon, we practice, we use Materia Medica, and we find these are so interesting things, but we don't know how it actually happens. Okay. But since I turned up to basic science and I started doing my experiments, I found out many things which were actually rightly said by Dr. Hahnemann. So every time I find some new thing, I always salute him that yes, that man, us time kuch bhi nahi tha us time. No, not any facilities were not available. Ye itna advancement nahi tha, but he was a genius. So I'll come to it. I'll share some my results with it. So basically that's why that was my turning point. So that's why I switched off to the research. And the best part, we think that scientists think that homeopathy, they think that homeopathy doesn't doesn't work. But when you prove yourself, they start believing.
So now it's been now 4-5 years in Amity University. When I first came, I tell you my experience, it's very tough doing PhD there because all the scientists around, they are like waiting to hear what you say. And they are like, I tell you, these are jokes right now, but they are very kind enough to adopt me in that situation when I was totally raw at that time, if I would say that. तो वो कहते थे, अरे तुम होम्योपैथिक, तुम इसको कैसे करोगे? So this is what my guide always used to say. People shouldn't say this to you. She always used to say, तुम इसको इतना सही करो कि तुम्हें कोई बोल ना पाए कि तुम होम्योपैथ हो, तुम ये नहीं कर सकते. So that was her encouragement. Professor Dr. Simran Tandon, she's a hardcore scientist in stem cell technology. So she always, and my co-guide, Professor Dr. B.C. Das, he is the chairman of our institute also. He used to say, homeopathy is bullshit, but prove it is not. So I used to, that was the encouragement, the scientists give you that boosting energy that you prove that it is not. You have all the facility, you do. So that's how it was for me at the beginning. And few of them said, अरे उसमें तो कुछ नहीं होता है, उसमें तो पानी आप गंगोत्री में डालो और जाके Bay of Bengal से collect करो, ये तो homeopathy dilution है. That was also there. But you won't believe those people, they want to work with homeopathy. Genetic engineering, they want to work with homeopathy. Tissue engineering, they want to work with homeopathy. Why? Because now they had come, then they have seen. So if you have to show something, you have to do something. That was my intention. So, right. So this was just a basic, just to make you understand. Maybe some recent pass outs will be hearing also. So that is a basic thing which I wanted to share for encouragement, that don't stop कि ये हो गया, पढ़ लिया, हो गया. आप कुछ अलग सोचो, आप कुछ अलग सोचो, because हमारी उम्र हो गए, हम तो एक लेवल तक करके चले जाएंगे. And then you have to carry on, right? So now I will share few slides of my presentation, which I already presented in few conferences. तो सबसे पहले मैं ये एक just a second. Yes. So this was in 2020. I just share my screen. Okay, I hope it's visible. Right? Yes, ma'am. Is it okay? So I just a second. I just try to. Okay. So this was in the year 2020 where I presented my. These are all my studies which I had already done. ठीक है, तो बहुत सारी चीज हम प्रेजेंट जब तक अनपब्लिश्ड होता है ना, हम प्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सर्टन on formalities. So this was one of my drugs which I'm working with, Arnica montana. So everybody know about it obviously, but this is one of my very favorite medicine, Arnica montana. So this was my choice to select this medicine to work on breast cancer. I'll just relate why and how. So this was my topic there, that Arnica montana displays differential cytotoxic and anti-proliferative effect on breast cancer cells vis-a-vis normal cells. So if you can see my pointer moving. Yes. No? I just make a pointer. Okay, now you can see my pointer moving. No? No, ma'am. Okay. Now? No. Because I want that you should be seeing my pointer so that I can. Is it moving now? Yes, yes. Okay, thank you. So, I am the first author for the study. And as I mentioned, Dr. Simran Tandon is my guide, Dr. Bhudev Das is my co-guide, and Dr. Mani Luthra Gupta Sarma, she is a professor at PGI Chandigarh. She is my external co-guide, and Dr. Manoj Garg, he's a scientist here in our Amity University who also helped me during this study specifically. So now this is not moving. I don't know why.
Now it's working. So you can see the background. So the breast cancer is the most relevant cancer in females in India. So it treats, its treatment includes chemotherapy, radiotherapy, and also has known adverse effect. So this is all known to everybody. So right now the goal of cancer treatment is to reduce the disease burden by limiting the cell proliferation and metastasis, thereby increasing tumor load, decreasing tumor load and prolonging the life survival of the patient with an improved quality of life. So basically, if we know what is cancer, as we almost everybody knows, that it is an uncontrolled proliferation of cells and tissues. So cells, obviously, then it comes to tissue. So if we see, if we can limit that cell growth, that is the proliferation, and also the metastasis. Metastasis means from one place to other place, the cells move from one place to another. So if we can limit this, so we can also limit the disease, reduce the disease burden, and also prolong the life of the patient and improve the quality of life. So although there have been significant advances in research, the prognosis remains dark, largely due to the cytotoxicity to the normal cell. So as we know that when after chemotherapy, the chemotherapeutic drugs, the conventional chemotherapeutic drugs, they also kill the normal cells. Why? Because the chemotherapy agents, like they have they cannot identify whether they are, they have to basically kill all the proliferating cells. Whatever the highly proliferating cells are there in the body, they target that. Same with the radiotherapy. So that's why the cytotoxicity to the normal cell causes the harm after chemotherapy. So there is oral aphthous ho jata hai, there is skin dermatitis, and there are many more complications, as you know. So this is just because of the adverse effect of the chemotherapy. तो अगर हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जहाँ पे ये adverse effect ना हो, we basically know that it doesn't have any जो general notion है कि homeopathy doesn't have any side effects, but how to prove it? So basically यहाँ पे इस study में आप देख सकोगे that it is that हमारे homeopathic medicine से normal cells पे कोई effect नहीं होता है ज्यादातर. So homeopathy plays a significant, clinically significant role due to its capability of rendering effective results and have rendered reduced or no side effects. So Material's method, ye cell lines. So we have taken MCF10A cell lines. These are the normal MCF epithelial breast cells. And then we have taken MCF7 cell lines. That is, these are breast cancer cells which are hormone dependent. Okay. So then the medicines used, as I already mentioned, we had taken Arnica montana. So what were the studies, the methods, what were used? That cell viability was assessed by to assess the cytotoxicity, matlab, what was the amount of cell death, to assess that. And then the clonogenic assay was done to see whether after the cell, after you seed cell, so basically before all these things, I should be saying that these are all in vitro studies. Okay? We grow cells in the petri dish, and then we see what are the effects of our drug in the petri dish. Okay, so these are all in vitro study, all lab work, nothing related to patient. So we check whether there is like we seed some of the cells to the these petri dishes. These are the 12 well plates. So we seed cells, and then we give our drugs, and then see whether they grow in number, they form colonies, which normally the breast cancer cells do, or they don't. So that is how this clonogenic assay is done. Then the migration assay, for migration to appraise whether there is anti-migratory effect of the homeopathic medicine. And the third, we did a co-culture assay to assess the cytotoxicity to the normal cells. So these are the methods which we had followed, the assays. So co-culture protocol means, that means we had developed we have developed a model where we have transfected the normal. Transfected means basically हम लोग जो viral particles डालते हैं
with to infect the normal cells, normal breast cells, जिसमें ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है GFP tagged, GFP positive. So GFP is a fluorescent protein which fluoresce when we when we can check in the microscope, fluorescence microscope, and also जब हम लोग ये sorting करते हैं, एक तरह का instrument होता है flow cytometer, वहां पे हम assess कर सकते हैं if this GFP positive cells are there, right? So basically our idea was to tag the normal cells with GFP. That means it will be fluorescing green color, and the breast cancer cells were not tagged. Now this model was produced with using this co-culture model, and then we seeded both the cells, cancer cell भी डाला हमने और normal cell भी डाला. उसके बाद फिर अपना drug डाला, और उसके बाद क्या हुआ फिर मैं रिजल्ट में बताऊंगी. So this was the protocol. So now we come to the results. So if you can see the viability. This is the cell viability as I first mentioned. So after the drugs were seeded, the cells were seeded. These are the cancer cells, MCF7 you can see here. And these are the MCF10A cells, which are the normal cells, normal breast epithelial cells. So here we had seeded, and then we had given our drugs. Drugs means this, you can see there's a control. Control means it is that there is only food. Okay, food means the media, and with all the growth factors and all, so that they grow. And then the solvent control. Solvent control means 90% alcohol. So we use 90% alcohol because the medicines which we had used, like Arnika's mother tincture, 6C, 30C, and 200C, they were all made in 90% alcohol. So हमें ये देखना होता है कि हमारा solvent जो जिस पे हमारी Arnika बनी हुई है, whether they are they killing the cells or our medicines are killing the cell. तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अल्कोहल तो किल नहीं कर रहा है, तो इसीलिए सेम क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी पे हम ड्रग डालते हैं उसी क्वांटिटी में हमें सॉल्वेंट कंट्रोल में भी अल्कोहल डालते हैं, दैट इज 90% अल्कोहल, and then we see whether there is effect on it. So if you can see, I don't know whether you can see my pointer. I don't know why you're not seeing the pointer. So yeah, I think you can see. So this is the control. See, there is no significant change in the solvent control bar, right? So that means my alcohol is having no effect on the breast cancer cells. But now see, so this is the cisplatin. Cisplatin is the common chemotherapeutic drugs which are used in cancer patients. Okay. So this has, see, 50%. So we had already calculated the IC50, that is inhibitory, this condition where the 50% the cells die. So this this IC50 was given. So see, this is 50% cell death. And now you see Arnika mother tincture. Here it is almost aspas, okay, but it is also causing cell death, the cancer cell death, okay. And see Arnika 6, it is also causing, see 200, all are causing cell death. So this is in relation to control as well as the cisplatin. So here we can say that Arnika montana displays cytotoxic effect on the breast cancer cells, right? So, but it shows no cytotoxicity. अब आप यहाँ पे देख सकते हो, as I mentioned, MCF10A, this is normal epithelial cell. अब देखो, same thing was done, and see the cytotoxicity, cytotoxic, it is the cisplatin is cytotoxic to the normal breast cells also. But देखो हमारे Arnika, this is not cytotoxic, right? It is almost living. Similar, so we can conclude that it is not cytotoxic. Now we wanted to show more that what our drug do. So now this is the clonogenic acid assay. As I said, we seed a few cells, like 100, we count 100 cell and seed it on the Petri dish, on the 12 well plates, as I mentioned, this one. Where did it go? It is not moving again. My slides are not moving.
I just stop share and sharing again, okay? Because it's not moving. No worry, ma'am. I don't know why. So it's visible, right? The slides are not moving. क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकंड. स्लाइड मूव नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों. अभी तक तो हो रहा था. मैम एक बार ना शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए और फिर उसके बाद दोबारा शेयर करिए, हो जाएगा. हाँ मैंने स्टॉप किया था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है फिर. एक मिनट मैं यहाँ से करता हूँ मैम. आप शेयर कर सकते हो, मतलब आप मूव कर सकते हो. मैं नहीं कर पा रही हूँ. एक मिनट रखिए. सडन हो गया ना, अब तक तो हो ही रहा था. I just wanted to show the earlier one. करूँ मैं दोबारा शेयर? हाँ मैम करिए. ओके. ओके. हाँ. सो ये जो डिशेस आप क्लोनोजेनिक एसे में देख सकते हो, तो हम इस पे सीड करते हैं 100 सेल्स. बेसिकली आइडिया जैसे मैंने पहले भी बताया, द कैंसर सेल्स है ना एबिलिटी टू ग्रो इन colonies, grow into colonies. So we want to see whether it can prevent, our drug can prevent the colony formation or not. So that was the clonogenic assay. So if you see the right side of the thing, clonogenic assay, so the cisplatin could resist the colony formation, but the alcohol, that is the solvent control, did not stop the growth of the colony. That means alcohol has no effect again. And but see the arnica mother tincture, it had reduced the number of colonies. And similarly, the others did not have much effect, but then also arnica 30 had a little. So if you want to see the representation, where is my clonogenic assay? Okay, so the dishes are not visible. So next presentation mein usme dikha denge. So this was the clonogenic assay. It could resist. Okay. Then the migration. So if you see the migration assay here, see in the first. Just a second. Yes. So in the first, see you see MCF7. पहले graph से पहले आप इधर right side में देखिए the diagram. So what we do, we make scratch on the dish, right? So then after scratching, so you see the gap between the two yellow lines are the scratch. That means there is no cells in the 0R in all the three dishes. See, for cisplatin also and for mother tincture also. But just below the second, the first image, you can see there is all the cells have grown up. That means they had migrated. So migration, सारे cells yellow line के बीच में से आ गए. ठीक. But आप देखो cisplatin में यहाँ पे भी आ गए. The red lines, the cells between red line is the still there is a gap. Okay. So, and see the arnica montana. See, there is a huge gap. That means it could resist the migration of the cancer cells. Right. And now you see the 10A, MCF 10A, that is normal breast cells. Here, arnica did not resist it. See, there are no gap between the yellow lines, the lower, the एकदम last में जो corner में जो आप जो देख सकते हो. मैं annotation फिर लूंगी तो फिर वो slide move नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं कर रही. So, बट देखिए आप बीच वाले लाइन पे MCF 10A के नीचे जो सिस्प्लाटिन वाला एरिया है, यहाँ गैप फिल नहीं हुआ है. दैट मींस देयर इज सम cytotoxic, that is there is some bad adverse effect on the normal cells with the cisplatin, which is not there with our arnica, right? So here now you see the graphical representation of MCF 10A and MCF 7. So MCF 10A grew more. But see the 7, our drug could, our medicines could resist the migration. So arnica montana in mother tincture and 6C prevents migration in the breast cancer cells, and it did not have any anti-migratory effect on the normal breast cells. So this was the inference. So as I said about the co-culture. So co-culture,
I again take the annotation, नहीं तो दिखेगा नहीं, but I don't know, then I have to reshare. Okay. See. Right. So यहाँ आप देख सकते हैं हमने कैंसर सेल जैसे मैंने बताया MCF7 को और MCF10A जो टैग कर दिया था हमने ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन से, उस दोनों को हम को कल्चर किया, मिला दिया, ठीक है, देख मिला, जैसे हमारे बॉडी में सारे सेल्स मिले हुए होते हैं, वी डोंट सी इट ऑन सिंगल सेल, राइट। अब मिलाने के बाद ये जो आप लाइट माइक्रोस्कोप का फोटो देख पा रहे हो इसमें, दिस इज अ कंबाइंड, सो कैंसर सेल भी है इसमें और नॉर्मल भी है। बट अब इसमें देखो मैं फ्लोरेसेंस वाला जो एरिया है यहाँ पे फ्लोरेसेंस जो कर रहा है, दैट मीन्स दे आर ऑल नॉर्मल सेल्स। I hope you understand. Please respond. मतलब नहीं तो फिर मैं आगे समझा नहीं पाऊंगी. So these white area, these are the light microscope photograph. Same field में हमने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से फोटोग्राफ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं, so that means these are cancer cells as well as the normal cells. बट यहाँ जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में आपको ग्रीन दिख रहा है, these are only the normal cells, ठीक। So ये control है. Control means we did not give any drug in this dish. So here what happens? See, number of normal cells are little. यहाँ पे. So how much? 33% here. And see this, Arnica montana. This is again cancer cell and normal cell mixed. And here it is only normal. See the number of green cells. That means there is proliferation of the normal cells. The normal cells are not harmed. ठीक है, बट कैंसर सेल्स आर हार्म्ड, वो मैं पहले दिखा चुकी हूँ. सो दिस इज ओनली टू शो दैट द नॉर्मल्स आर नॉट हार्म. और अब इधर देखिए नीचे, सो दिस इज सिस्प्लैटिन, सो दिस इज द नॉर्मल सेल, द कैंसर प्लस नॉर्मल, एंड सी दीज आर द नॉर्मल. सी देयर आर ओनली फ्यू सेल्स हियर, ग्रीन वंस, ठीक है. सो दैट मीन्स ये यहाँ पे देख सकते 33% GFP ये दिख रहा है, 33% है. यहाँ हमारे 40% है, दैट मीन्स इट इज ग्रोइंग. दिस इज ओनली अ 24 आवर्स स्टडी, इसीलिए इतना कम है. जब मैं ग्राफ समझाऊंगी तो और बताऊंगी. ये देखो यहाँ पे इट इज गोइंग डाउन 25. सो नाउ वी कम टू द ग्राफ, ठीक है. कंट्रोल देखो, जितना टाइम जा रहा है नॉर्मल सेल्स आर डाइंग इन द कंट्रोल, देयर जहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है. इन सिस्प्लैटिन ऑल्सो द नॉर्मल सेल्स आर गोइंग डाउन. these are only for the normal, this graph, ठीक. So these are 24 hours, 48 and 72. This is the color pattern. But see for mother tincture, it is more. You see this green, this dark green 72 hours वाला. यहाँ पे mother tincture का देखो, 6 में देखो. So this shows that it is having no or negligible effect on the normal cells, जिसको हम बोलते हैं कि there is no cytotoxicity. ठीक. And now let me check whether I can go back. Yes. So the conclusion for this whole paper was that the effect of Arnica montana on breast cancer cells showed cytotoxicity and anti-proliferation, but it did not have any effect, I mean no toxic effect on the normal breast cells. So these were the reference. So this was the first slide which I wanted to show. Okay, so if I may stop this and I come back. So this was my first paper जो मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाह रही थी. इसमें से किसी को कुछ पूछना है? Yes, I think there's a hand going up. Yes, Dr. Bhatnagar, you want to ask something maybe before I go to the next one. Or you want the question answer session at the last? Anything you want, so that I can go to the next one. Have you shown the effect of Arnica 6 also in this? Only Yes. The Arnica mother tincture has been there. No. Mother tincture 6, 30, 200, all. You have used all the. Yes. Please see the graph. Graph में सारे दिया हुआ. एक सेकंड में यहाँ पे. Just a second. All, because mother tincture I had to show because उसका भी कारण है, मैं बताऊंगी क्या. ये देखिए, आप ग्राफ देख सकते हैं नीचे, ग्राफ के नीचे देखिए सारे 6 है, 30 है, 200 है. जी हाँ. ठीक है ना. बट
ऑब्वियसली जो मदर टिंचर है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट है, बिकॉज दैट इज द इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट. अगर आप साइंस के लैंग्वेज में मदर टिंचर को बोलोगे, दैट इज इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट. And you आपने तो शो करा ही है कि अल्कोहल का उस पे कोई खास असर नहीं था. नहीं है. यही एक्चुअली पता है. For the physicians, it is very important. Yes. Important. That is what I'm saying. Hahnemann अगर कुछ करके गए तो it is actually complete. Yes. तो अगर आपको प्रूफ करना है बाहर वालों को, तो वो किसी को तो करना है ना. तो वो थोड़ा सा किसी, मैं अभी शुरू की हूँ, अभी बहुत लोगों को करना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट बाय पॉइंट यू हैव टू आंसर व्हाई, व्हाट इज इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई we made it very sure, very particular that our solvent control has no effect. अब इसका भी यस, बट अगर आप बहुत सारे साइंटिफिक पेपर में आप पढ़ोगे, इनफैक्ट बहुत सारे देखोगे, उसमें दे से देयर इज नो इफेक्ट ऑन, मतलब कोई भी ड्रग आप अगर कोई भी आप पबमेड चले जाओ, आप उसमें होम्योपैथिक डालो एंड पेपर्स पढ़ोगे, बहुत सारे लोगों में लिखा है कि इनके हमारे कोई इफेक्ट आया ही नहीं. देयर इज नथिंग, यू विल गेट मेनी पेपर्स. व्हाई इज इट सो? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर यहाँ पे हम एज अ होम्योपैथ अगर साइंटिस्ट बनता है, वो आता है. Why? Because we have to understand what our drug do, like what is the philosophy behind our homeopathy. ठीक है ना. हमें ये पता होना चाहिए what is the dose, कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए. जैसे हम अब मैं तो होम्योपैथ हूँ, तो हमने तो एक बार ड्रग दिया. साइंस में क्या होता है, एक बार ड्रग दिया, उसके बाद हमने स्टडी कर लिया. जो एनालिसिस ये जो मैं आपको सबको शेयर की हूँ, ये सब एक बार ड्रग देने के बाद. फिर मैं तो होम्योपैथ हूँ, मैं दिमाग में कीड़ा घूमता है, तो हम तो दवाई तो पेशेंट को बार बार देते हैं, है ना. रिपीटेड भी करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, कोई तो 1000 बार करते हैं, विच इज नॉट डन. तो जब हम रिपीट पोटेंसी भी करके देखें, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. इफ यू डू साइंस बीइंग अ होम्योपैथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू रूल आउट मेनी थिंग्स. ठीक है. अब जैसे सक्कशन वाली बात है, बहुत सारे पेपर्स आपको दिखेगा कि सबका हमारा जो इम्पोर्टेंस है सक्कशन का, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि देयर इज नो इम्पोर्टेंस, मतलब देयर इज नो रेलिवेंस, कुछ भी सक्कशन करके हुआ नहीं. उसका रीजन है, वो सक्कशन कैसे किया, दैट इज इम्पोर्टेंट. उन्हें पता नहीं है कि दिस इज सक्कशन. बहुत सारे जगह पे नहीं पता है सक्कशन मीन्स लोगों को लगता है कि अल्कोहल मिला दिया, दैट इज सक्कशन. ओके. सो वो आप एज अ होम्योपैथ जब साइंस करने लगते हो, तो बहुत सारे नोशंस क्लियर हो जाते. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एटलीस्ट टू शो दैट अल्कोहल का कोई इफेक्ट नहीं है. सेकेंडली, आई वांटेड टू शो दैट होम्योपैथी एज अ medicine, it does not have any effect on the normal cells, which is very 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 important. ये तो मैंने normal breast cells पे दिखाया है. अभी मैं नेक्स्ट काम कर चुकी हूँ, which जब तक मैं पब्लिश नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रेजेंटेड है, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ. ठीक है ना. तो जब तक पब्लिकेशन नहीं होता, वहां पे मैं आपको बस ब्रॉडली बोल सकती हूँ. आई हैड ऑल्सो सीन देयर इज नो नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट, जो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ डॉक्टर्स, एंड वो बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलते हैं, उनको पता नहीं है. और क्यों नहीं पता है? क्योंकि कोई काम नहीं है. राइट. तो उसमें भी हमने दिखाया हुआ है कि किडनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है. ठीक है. तो दैट पेपर जब आता जाएगा, वो आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा. दिस इज ओनली वन ड्रग, देयर आर मेनी व्हिच वी आर वर्किंग ऑन. ठीक है. सो नाउ आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग. यू एनी अदर एनीथिंग एनीबडी एल्स वांट टू नो? मैं फिर आगे बढ़ूं. ओके. So we can go to the next one. I hope you can see it again. See my screen, I mean. Yes. So, अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है, this is a presentation which I had given in APOCP. This is a science conference. Where I had given this presentation last year, in 2020. It was an online presentation, obviously, because COVID chal raha tha. So here again, a question comes that you cannot give homeopathic medicine along with some allopathic medicine, right? I cannot comment on Ayurvedic because I don't know how it works, but I can comment specifically on allopathic medicine because हम उसके साथ काम कर चुके हैं. तो जैसे वो कीड़ा होता है, हमने सोचा जब
होम्योपैथिक मेडिसिन, मुझे ऐसा लगता है होम्योपैथिक मेडिसिन आर वेरी माइल्ड, they act very mildly on the cancer cells, and cancer cells are very 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 rigorous and they need something, you know, बहुत जोर का धक्का चाहिए, झटका चाहिए जिसे बोलते हैं. तो उस तरह से एलोपैथिक मेडिसिन जो कन्वेंशनल केमोथेरेटिक ड्रग जो है हम बोलते हैं ना, उनको चाहिए. एक्चुअली कैंसर सेल्स वांट, दे एक्चुअली रिक्वायर दैट टू किल. बट अगर हम उसको साथ में मिला दें हमारे ड्रग को, फिर क्या होता है? So that was my question. So that was my question in my mind. So this what we had done. So we had seen the synergistic effect of Arnica montana and cisplatin. Cisplatin is the conventional chemotherapeutic drug on MCF7 human breast cancer cell line. So MCF7 is again hormone dependent breast cancer cells. Again, this is a in vitro study. So background, cancer stands the second as a worldwide killer along the according to the World Health Organization 2018. वैसे उसके बाद अभी it doesn't stand second. ये पुराना है slide, 2020 का है, but 2021 they had declared is the first breast cancer first में आ गया. ठीक है. So treatment of cancer with platinum-based anti-cancerous drugs, cisplatin, has been documented to adversely impact the survival of the normal cells, developing high systemic toxicity and resistance. New treatment strategies are coming into existence, out of which one is combining the effect of the phytochemicals with these chemotherapeutic drugs to reduce toxicity to the normal cells and enhance the efficacy. So ये अभी नया ट्रेंड चला हुआ है. जैसे मैंने बताया कि अगर हम सिर्फ कन्वेंशनल ड्रग यूज करते हैं वो टॉक्सिसिटी करता है, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी. बट अभी नया ट्रेंड चला है कि अगर इसके साथ, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट के साथ, अगर केमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के साथ अगर हम लोग फाइटोकेमिकल बेस्ड नेचुरल मेडिसिन बहुत सारे आते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन आता है, आयुर्वेदा आता है, हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन आता है, अगर इनको अगर आप कंबाइन करते हो तो क्या होता है? तो ये नया ट्रेंड चला. So in this light of in the light of this complementary additive treatment modalities which can reduce the dose of cisplatin and still be highly effective. So this is what we thought कि अगर हम लोग जो हमने आपको दिखाया था IC50 means that 50% killing हो जाता है, ये जो ड्रग देते हैं ना सिस्प्लाटिन, वो हमने निकाला, that is IC50. हम अगर उसको अगर मतलब हम केमोथेरेपी एजेंट यूज करें बट साथ में अगर होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करें, उससे क्या होता है? अगर हम वी कैन ऑल्सो रिड्यूस द dose of the chemotherapeutic agent, conventional one. I'll show that. This is the background just. I'll show the this thing. So sequesterpin lactones are the secondary plant metabolites that exerts anti-cancerous properties, acting specially against the inflammatory pathways. So as I said, Arnica was one of my very important, matlab, I'm in craze with Arnica montana because it is anti-inflammatory, and cancers, all the cancers basically has a background pathology of chronic inflammation. So I hope क्यों हम इसको choose किए थे. And moreover, breast is such an organ which has a tendency to get repeated traumas. तो अगर homeopathic point of view से भी अगर Metria medica not pathologically भी अगर नहीं सोचोगे, फिर भी आपके पास Arnica montana is one of the medicine आता है. थोड़ा सा हटके सोचना पड़ेगा. ठीक है. Okay. So Arnica belongs to the Asteraceae family containing this bioactive compound, which is sequesterpin lactone, which is a anti-inflammatory, which works on the anti-inflammatory pathway. So Arnica montana showed toxicity unless diluted. Means Arnica is actually a very toxic plant. अगर उसको डाइल्यूट नहीं करते हैं, मतलब जो हम लोग होम्योपैथिकली यूज करते हैं, दैट इज वेरी सेफ. बट अगर आप नेट पे पढ़ोगे, इंटरनेट पे आप सर्च करोगे, Arnica montana इज नेवर यूज्ड एज अ मेडिसिन बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी. वो यूजुअली बहुत पहले स्किन के केसेस में लोकल एप्लीकेशन में यूज होता था, बट बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिसिटी दे आर नॉट यूज्ड. ठीक है.
So different groups showed anti-cancer effects of highly diluted phytochemicals. So we thought of seeing Arnica montana in dilutions showing anti-inflammatory effect in acute and chronic model. Okay. So ethanolic extract, as I mentioned, this paper was presented in a science conference. So unko Arnica montana mother tincture, I had present mother tincture as ethanolic extract, and here I mentioned that. So ethanolic extract of Arnica montana has exhibited potent cytotoxic effect on MCF7 breast cancer cell. Earlier studies done, जो मैंने अभी आपको दिखा भी दिया, and there is also an upcoming publication. It is already under process. Maybe within a month or two, you will read it in homeopathy. Okay, so therefore in this work, we have investigated the cytotoxic effect of the dilution of Arnica montana in combination with the lower concentration of cisplatin. So हम लोग IC50 use करते हैं, जहाँ 50% cytotoxicity करते हैं, तो हम लोग उसके डाइल्यूशंस और कम कर दिया, मतलब सिस्प्लैटिन को हमने थोड़ा सा लोअर डाइल्यूशन में ले आए, जितना साइटोटॉक्सिक वो करता है उससे कम. So 30, IC30, we had calculated the IC30, IC20 and IC10 on MCF7 breast cancer and combined with Arnica. So again, the cell line used was human cancer cell line, hormone dependent MCF7 cell line. So, and the treatment done was different dilutions of Arnica montana was prepared. So first was the ethanolic extract, that is the mother tincture, or we had prepared 1C and 2C in our lab by diluting 1 part of mother tincture by 99 part of alcohol. That is 10 to the power 2 uska dilution ho gaya hai, and 10 it is according to the homeopathic pharmacopoeia of our Indian homeopathic pharmacopoeia. और 10 stroke करोगे तो वो 1C हो गया. फिर 1C से 1 part लेना है, 99 part alcohol लेना है, 10 stroke देना है, तो वो 2C हो गया, and the dilution becomes 10 to the power 4. So we made this, and then inhibitory concentration of cisplatin was calculated, and according to that we had calculated the inhibitory concentration of IC30, IC20 and IC10 of cisplatin for 48 hours. मतलब 48 hours का हमने treatment करा है MCF7 से, and then we found out what has happened. Okay, so this is how you have to. Yes, I think somebody wants to ask something. Yes, if you may. Anybody wants to ask something? There is some hands raised, I get. मेरे पास आ रहा है. Okay, no. So the IC50 was calculated. So this is the software does it. We find out the cell type, मतलब कितना cytotoxic है वो हम multiple वो करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है crystal violet assay करते हैं हम. 96 पेल प्लेट में सेल सीड करते हैं, फिर ड्रग डालते हैं, ड्रग डाल के फिर उसको ओवरनाइट रखते हैं इंक्यूबेशन, उसके बाद फिर उसका एमटीटी करते हैं, या फिर मेरे इस केस में मैंने क्रिस्टल ब्लू, दीज आर ऑल केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड एंड टू सी वेदर हाउ मेनी सेल्स आर लिविंग एंड हाउ मेनी सेल्स आर डाइंग. फिर उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देन वी फाइंड आउट द IC50. फॉर हियर दिस IC50 is 1.49, and then further we calculated these IC30, 20. This is for the cisplatin. Then we did a मतलब हमें ये भी देखना है कि Arnica montana जैसे ऑलरेडी पहले देख चुके थे, but this was a separate study, so we wanted to see the mother tincture and dilution 48 hours में कितना cytotoxicity करते हैं compared to the control. So we normalize the result to the control. See, you can see 100% अगर हम control पे रखते हैं, then IC50 of cisplatin is see, you can see we have calculated. So इस ग्राफ में भी आपको IC50 दिख रहा है, और मदर टिंचर का Arnica 1C और 2C का भी आप रिजल्ट्स देख सकते हैं. ठीक है, दिस इज सिंगल. नाउ वी हैव कंबाइंड, अभी बाद में आ रहा है को ट्रीटमेंट. So on co-treatment with cisplatin, the dilutions showed differential result. Differential मतलब अलग-अलग तरीके से. So if you see this graph, आप इधर देखोगे viability normalized to control. That means control को हम हमेशा 100% रख के बाकी चीज calculate करते हैं. This is how graphs are made. So अब देखो control means जो
यहाँ पे, हाँ. So IC50 का result, sorry, IC30, that means lower concentration of inhibitory concentration of cisplatin, inhibitory concentration of cisplatin plus arnica. ये जो ऊपर का ग्राफ दिख रहा है, that means this is IC30 and नीचे ये. अब आप देखो इसके viability कितना अच्छा result दे रहा है mother tincture. It is going as good as cisplatin. अगर हम IC50 ऑफ सिस्प्लेटिन ना भी यूज करें, देखिए 50% वायबिलिटी इसका दे रहा है, वायबिलिटी या टॉक्सिसिटी जो भी आप बोल लो. वायबिलिटी मींस कितना, 50% सेल ही जिंदा रहा. ठीक है. सो आई थिंक यू अप्रिशिएट द ग्राफ और आई टेक द एनोटेशन. फिर वो स्लाइड रुक जाता है, मेरे वही डर लगता है. ओके, आई विल शो यू. सो आप देख सकते हो, सी IC30, दैट मींस लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सिस्प्लेटिन, लोअर कंसंट्रेशन एंड मच लोअर कंसंट्रेशन. साथ में हमने इसको मिलाया, देखिए इट इज ऑलमोस्ट 50%. सी द मदर टिंचर, दैट मींस इट हैज अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, द एड ऑन इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं. दैट इवन इफ वी डोंट यूज IC50 यूज करने से क्या होता है, मोर कैंसर सेल्स आर डाइंग एंड ऑल्सो द नॉर्मल सेल्स आर डाइंग. अगर उसका साइटोटॉक्सिसिटी कम करके हम IC30 to 20 और IC10 यूज करते हैं, मतलब लोअर इनहिबिटेड कंसंट्रेशन सिस्प्लेटिन यूज कर रहे हैं बॉडी में, तो रिजल्ट में देखो डिफरेंस नहीं आ रहा है. हम साथ में क्या ऐड किया है, हमारे होम्योपैथिक. सो दिस वाज माय वर्क देयर. सो आई होप यू अप्रिशिएट दिस. अगेन गॉन, आई कांट सी माय, I can't move my slide again. I know there's some problem. Okay, so for the discussion, we move to the discussion. In this study, the growth inhibitory activity of arnica ethanolic extracts and its dilution, along with the chemotherapeutic drug cisplatin, were assessed, investigated in MCF7 cells. Our studies, our results indicate that both the plant extract with their dilutions and chemotherapeutic drug mediated significant growth inhibitory effect on both cell lines tested in the dose-dependent manner. Recent studies shows that combination chemotherapy is a superior modality of treatment and that naturally occurring agents with known anti-cancer activity could be used in the combination of chemotherapy to reduce the systemic cytotoxicity. ये important था हमारे लिए. अगर हम systemic cytotoxicity reduce कर सकते हैं, that means आप chemotherapy से कैंसर सेल को भी मार रहे हो और साथ में आप सिस्टमिक साइटोटॉक्सिसिटी हमारे ड्रग से यूज कर रहे हो, मतलब रिड्यूस कर सकते हो. सो दिस इज द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. So our study shows that the combination of lower inhibitory concentration of cisplatin and arnica potently inhibited cell growth than the single treatment of arnica in the cancer. इसमें क्या है, अगर सिर्फ arnica आप यूज कर रहे हो उसमें भी उतना साइटोटॉक्सिसिटी नहीं दे रहा है, और आप उसके साथ मिक्स कर रहे हो ज्यादा दे रहे हैं और सिस्टमिक भी कम कर रहे हो. ठीक है. The co-treatment can reduce the concentration of cisplatin that usually produce cytotoxicity without hindering the cytotoxicity to the cancer cell. मतलब उतना ही कैंसर सेल को साइटोटॉक्सिक कर रहा है, बट वो सिस्टमिक को रिड्यूस कर दिया जब हम आर्निका के साथ कंबाइन किया. सो आर्निका कैन एनहांस प्रोलिफरेशन ऑफ द नॉर्मल सेल्स, जो मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुकी हूँ, जो मैंने अभी इससे पहले जो स्टडी दिखाया था, साइटोटॉक्सिसिटी कैंसर का और नॉर्मल को भी बढ़ाता है. ठीक है. दिस इज अगेन इन द प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा. So this also gives evidence that phytochemicals used in traditional systems of medicine like TCM means traditional Chinese medicine, Ayurveda, homeopathy, etc. might have no interaction with the chemotherapy if given together. बाकी का तो मुझे नहीं पता, होम्योपैथी का तो डेफिनेटली इंटरेक्शन नहीं होता है. हम इस स्टडी से, एटलीस्ट इस ड्रग से हमने देख लिया. And we have to see further studies and we have to go for, this is a preliminary study, mind you. Science say this is not enough, आपको और कुछ करके दिखाना पड़ेगा. तो अभी नेक्स्ट वाला जो पेपर है वो उसमें मैं आपको जब दिखाऊंगी तो और हमें जीन लेवल पे दिखाना होता है, फिर अब वो मैं प्रोटीन लेवल पे काम कर रही हूँ. I'll show you that. So
further studies are needed to know the exact mechanism of action validating our preliminary findings. We intend to do flow cytometry, जो मैंने अभी आपको बताया दिखाने के लिए कि annexin PI एक ऐसे होता है. These are dyes to see, to find out the degree of apoptosis in the co-treatment of MCF7 cell lines. So it is concluded that arnica may enhance the efficacy of cisplatin in MCF7 cells even at the reduced inhibitory concentrations, thereby limiting adverse effects, bystander effect of chemotherapy. So these are the references. Hopefully there's no... Okay, so anybody wants to ask any question regard till here? Then I go for the third. अगर patience है तो फिर third पे जाऊंगी. बहुत अजीब सा लग रहा होगा. Dr. Basu, can we quote your studies while giving some lecture or some that there is a study done on these things? आप ये वाला जो मैं अभी बता रही हूँ ना, आप कोट कर सकते हैं. सर एक्चुअली साइंस इज वेरी क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी है. जब तक पब्लिकेशन नहीं हो जाता ना, आप भी कोट करोगे तो आपको भी बताने में मजा नहीं आएगा. जैसे when you quote a study which is published, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है. बिकॉज देखो पब्लिकेशन पे जब वो रिव्यूअर के पास जाता है, 10 जगह जाता है, दे रिव्यू एंड देन इट गेट्स पब्लिश्ड. ठीक है, देन इट गोज इनटू दैट प्लेटफॉर्म. उस पेपर का, उस बोलने का वैल्यू बहुत होता है. होम्योपैथी क्यों स्यूडो साइंस बोला जाता है? बिकॉज हम बोलते हैं, वहाँ प्रॉब्लम है. सो बहुत मैं बता रही हूँ, बहुत जल्दी आपके पास आएगा. एंड आई एम टेलिंग यू दीज ऑल आर ओनली फॉर होम्योपैथी. मेरा फायदा जो होना है वो क्लिनिक से आर्निका से मैं निकाल रही हूँ. निकाल रही हूँ, इसी वजह से मैं साइंस पे आई हूँ. बिकॉज आई वांट टू नो हाउ इज इट वर्किंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो मैं बहुत बेसिक बात बता रही हूँ सर. अभी अगर आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे और सेल्यूलर लेवल पे, मतलब ये तो बता रहे ना, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हमने निकाला हुआ है. तो अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें सेल डेथ, तो सेल डेथ कितने तरह का होता है जो हम लोग पैथोलॉजी में पढ़े हैं. सो बेसिकली द फर्स्ट इज द मोस्ट कॉमन वी नो इज नेक्रोसिस. नेक्रोसिस मींस दे डाई. ठीक है, बट नेक्रोसिस में मॉलिक्यूल्स जो लिबरेट होते हैं, दे बिकम्स इन्फ्लेमेटरी. तो नेक्रोसिस इज नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ सेल डेथ. ठीक है, नेक्रोसिस होने से क्या होता है, देन यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग एन इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट which is bad for cancer. ठीक है, the next possible mode of cell death is apoptosis, which is the most desired one. ठीक है, that is suicide of the cell death. तो basically इसमें क्या होता है ना, वो that is desired. तो अभी मैं जो next presentation most probably उसमें है, मैं देखती हूँ, वहां पे हमने दिखाया कि हमारे जो आर्निका जो है वो, एक सेकंड मुझे एक्सक्यूज करना पड़ेगा, एक सेकंड. आई एम सो सॉरी. हाँ, कुछ बोल रही थी. हाँ, apoptosis. So that is the most desired form of cell death. ठीक है, so if I can show you, अगर next slide में है मैं देख लेती हूँ. So our homeopathic medicine, especially आर्निका पे जो हमने काम किया, they produce apoptosis. So this is the one mode of cell death. And then the third mode of cell death is autophagy. ठीक है, then the fourth is senescence. The cells go into continuous senescence, and they further, if you are triggering the senescence, they may go to apoptosis and they die. So these are various. So इतना ब्यूटी है हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन के कि यही आर्निका एक पोटेंसी में apoptosis करता है, यही आर्निका दूसरे सेल लाइन में ऑटोफेजी करता है,
यही आर्निका हायर डाइल्यूशन में दूसरे सेल लाइन में आऊंगी, उसमें कौन सा सेल लाइन बता रहे, वो सेनेसेंस करता है। एंड अगेन द ब्यूटी ऑफ आर्निका इज, एक होता है देखो सिर्फ सेनोसेंस अगर सॉरी सेनेसेंस अगर होता है दैट इज एक्चुअली नॉट गुड, दैट मींस द सेल्स आर नॉट डाइंग, दे आर गोइंग इनटू सेनेसेंस, एक उसमें चला जाता है लेवल में वेयर दे अगेन रीग्रो। इसीलिए बोलते हैं ना कैंसर जो है रिलैप्स करते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, या देयर आर कैंसर स्टेम सेल्स जो स्टेमनेस आगे बढ़ा देता है बाद में जाके, या मेटास्टेसिस होता है, देयर आर मेनी रीजंस। तो वन ऑफ देम इज दिस सेनेसेंस। तो सेनेसेंस सेल्स जो है ना वो दोबारा रीगेन हो सकता है, मतलब वो हो सकता है। तो उस चीज को हमारे ड्रग्स, इट इज अ सेनोलाइटिक ऑल्सो, तो हम जितना करते जाओ उतना हमें रिजल्ट्स मिलता है। एंड वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग दिस विद द केमोथेरेप्यूटिक ड्रग जो ट्रेडिशनली यूज होता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मोड ऑफ सेल डेथ, हम जो ये सारी बातें कर रहे हैं, ये मोड ऑफ सेल डेथ कैसे होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो वी हैव टू नो द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मैं अगर बोलती हूँ कि दिस इज एंटी एपोप्टोटिक, कौन सा एपोप्टोसिस कर रहा है, वेदर इट इज माइटोकॉन्ड्रिया मीडिएटेड या माइटोकॉन्ड्रिया नॉन माइटोकॉन्ड्रिया मीडिएटेड, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक, मतलब ये निटिग्रिटी अगेन दैट इज वेरी लेस। साइंस में जाओ तो उनके लिए तो और चाहिए कि कैसे काम कर रहा है, और भी आप बताओ। सो दिस इज व्हाट, मतलब मैं बहुत मोटा मोटा, एक दिन में इतना नहीं होता है, बट हाँ आई जस्ट वांटेड टू गिव एन आइडिया कि ऐसा भी होता है और ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो इफ यू मे अलाउ, आई थिंक आई कैन गो फॉर द लास्ट वन। एक मिनट। So this was the LMHI colloquium जो हमारा हुआ था ना दिसंबर में, so I presented this there. Okay. So I hope this is visible. Yes, ma'am. हाँ. So this was presented, ये colloquium जो हुआ था global 2021 में दिसंबर में, this was that presentation. So here we wanted to see that anti-epithelial mesenchymal transition property of Arnica montana attributed to mitochondria mediated apoptosis. So now we have come to more nitty-gritty. अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। बेसिकली एज आई जस्ट नाउ मेंशन दैट ब्रेस्ट कैंसर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बेसिकली टू टाइप्स अगर हम क्लासिफाई ब्रॉडली करते हैं। वन इज हार्मोन डिपेंडेंट, वन इज हार्मोन इंडिपेंडेंट। सो हार्मोन डिपेंडेंट मतलब अगर अगर ये सेल्स है ब्रेस्ट कैंसर सेल्स, ये ना हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, अलग अलग देखिए ये सब रिसेप्टर्स हैं। So these are the receptors में ये जाके बैठ जाते हैं। So this is designed this way. But इसमें देखिए these are hormone independent breast cancer में क्या होता है, इनके कोई receptors नहीं होते। So इसको हम लोग hormone independent cell line बोलते हैं, sorry cells बोलते हैं। So yes, so the background is hormone dependent means hormone receptor positive cell line. Hormone receptors कितने तरह के होते हैं? Mainly they are broadly estrogen receptors, progesterone receptors and human epidermal growth factor receptors और HER2 receptors. ये सब आपने आप लोग पैथोलॉजी में देखा हो, पढ़े होंगे। इसमें ना these are receptors which are present, जो मैंने थोड़ा सा डायग्राम पिछले उसमें बना दिया था। So if all of these receptors are absent, तो क्या हुआ? They are triple negative breast cancers. These are more मतलब fatal and these are not treatable. इनके treatments बहुत ज़्यादा difficult होता है। Why? Because जो hormone dependent होते हैं वो hormone receptors होते हैं। तो और hormone receptors, आप hormones ऊपर से तो वो receptor जाके block करता है। हार्मोन रिसेप्टर ब्लॉकेज होता है, सर्ब होता है, सर्म होता है, बहुत सारे तरीके का कन्वेंशनल ड्रग होता है जो हार्मोन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। जैसे हार्मोन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो कैंसर प्रोलिफरेशन वहां रुक जाता है।
So they have good prognosis and they are nicely treated, hormone dependent ones. But hormone independent में कुछ है ही नहीं, रिसेप्टर्स तो वो ब्लॉक भी नहीं होता है, तो हार्मोन इंडिपेंडेंट का ट्रीटमेंट भी बहुत डिफिकल्ट एंड हार्श होता है. तो बेसिकली यहाँ पे बहुत रिगरस केमोथेरेपी किया जाता है, which is again they relapses and then the patient has very poor prognosis and they are usually fatal. बहुत जल्दी patients वो हो जाते हैं. I don't know why this is not moving. Yes. So triple negative breast cancers or TNBCs possesses highly invasive and metastatic properties and thus has a poor prognosis. Metastasis इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? Since there is absence of hormone receptors in the TNBCs, the hormonal therapies available are ineffective. And hence treatment modalities are primarily dependent of aggressive chemotherapy regimens and surgery. जैसे मैंने अभी आपको समझाया क्यों होता है, because receptors नहीं होता है. So these approaches have higher degree of systemic toxicity and also these leads to and also leads to why this is not moving? Drug resistance. That means you are giving बहुत सारे टाइम आप सुने होंगे केमोथेरेपी दिया गया है and there is relapse and again जब केमोथेरेपी दिया है it is not working that much because of these this reason it becomes resistance. So therefore novel drugs with less or no cytotoxicity is the need of the hour, especially in cases of TNBC. आज के डेट में TNBC के लिए लोग हाथ खड़े कर देते हैं. So in TNBCs, there is polarization of epithelial cells after undergoing various biochemical changes to mesenchymal phenotype, which makes these types of cancer prone to invasions in the local tissues and enhance metastasis and thus elevated resistance to apoptosis. In the current study, we explored the anti-epithelial mesenchymal transition ability of Arnica montana in TNBC along with its cytotoxic potential. अभी मैं इसको समझा रही हूँ कैसे होता है. मैं एक मिनट कहाँ हो गया? Yes. No. एक सेकंड. Yes. So if you see this diagram, I just show this. So if you see this, this is epithelial to mesenchymal transition, which is a very important phenomena of pathway of cancer cells. Usually क्या होता है? Epithelial variety होता है. Absence, normally the cells are epithelial. When they become mesenchymal, see ऐसे cuboidal cells होते हैं. They undergo EMT transformation and they become like this. ठीक है? ये सेल के मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाता है, मेसेनकाइमल हो जाता है, लंबे लंबे हो जाते हैं, सिलिंड्रिक. एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, सो दिस इज द ब्लड स्ट्रीम, दिस इज द मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स. सो ये आप देखो, ये वाला सेल ये धीरे 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 EMT हो जा रहा है, मतलब एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन हो जाता है इन केस ऑफ कैंसर सेल्स. ये देखिए, ये धीरे धीरे ये इसके ट्रांजिशन होके ये मेसेनकाइमल बन गए और ये mesenchymal cell बनके it goes into the blood vessels and now it can travel to the bloodstream and it can go and get deposited to another डिस्टेंट साइट, जिसको हम डिस्टेंट मेटास्टेसिस. अगर क्लिनिकली हम बात करें, मान लो ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट से हो सकता है लिवर गया, लंग गया. ठीक है, LLBB जो हमने सर्जरी में पढ़ा था, लिवर, लंग, बोन, ब्रेन. सो TNBC का ब्रेन में मेटास्टेसिस इज वेरी मतलब कॉमन. तो ये चला गया. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमारा मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन कैन स्टॉप दिस, ये एपिथेलियली फॉर्म रखे तो ये ट्रांजिशन नहीं होगा,
मेसेनकाइमल, और मेसेनकाइमल ट्रांजिशन अगर नहीं होता है सेल्स के, देन देयर इज नो लीकेज और देयर इज नो इन्वेजन, और हम जाके हम अपने मेटास्टेसिस हम रोक सकते हैं. सो दिस वाज एस्पेक्ट ऑफ स्टडी. ओके, सो आई अगेन गो बैक टू माय मेन जहां हम काम कर रहे थे. सो दिस वाज व्हाट आई मेंट टू डिस्कस हियर इस बैकग्राउंड में. ठीक है, तो ये एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन ये इंपॉर्टेंट है, इसे रोकना. सो नाउ हियर इन दिस स्टडी वी हैड यूज्ड MDA-MB231. this is a cell line which is triple negative breast cancer cell. ठीक, and we had used arnica in mother tincture, that is ethanolic extract, 6C, 30C and 200C. all of them we had used. We have also used the conventional drugs of chemotherapy like doxorubicin and 5-FU as a positive control to compare उनके वो ड्रग के साथ हमारा कितना अच्छा या कितना खराब है. And again I compared with the 90% alcohol as a solvent control, which I told you why we did, to see whether the alcohol is not killing, our drug is killing. So क्या क्या assays किया हमने, तो cell viability, we had done cell viability ऐसे यूजिंग फ्लो साइटोमेट्री. तो अभी जो पिछले मैंने स्टडीज आपको बताया उससे हम लोग थोड़ा सा ना और एडवांस लेवल पे हमने अब ये वाले स्टडीज को किया हुआ है. ठीक है, उसमें हम लोग फ्लो साइटोमीटर, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, दिस इज ऑटोमेटेड, दे विल काउंट हाउ मेनी सेल्स विच आर एपोप्टोसिस गोइंग undergoing apoptosis, early apoptosis, late apoptosis and necrosis. So this instrument can do this. So this is a flow cytometer. And cell proliferation and seen by clonogenic assay, जो मैंने अभी आपको पहले डिस्कस किया, scratch assay जो migration, this also I had discussed, but here I can show you how it is done. Then gene expression, मतलब हमारे जीन लेवल पे ड्रग किस तरह से कौन से जीन को इफेक्ट कर रहा है, that we had seen using the real time PCR. जो आप कोविड में बहुत सुने होंगे, रियल टाइम RT-PCR डायग्नोसिस में अब यूज होने लगा है, कोविड के टाइम से और ज्यादा यूज होने लगा, बट एक्चुअली रियल टाइम और RT-PCR इज जनरली यूज इन जीन एक्सप्रेशन स्टडीज टू, मतलब हमारे केसेस में जैसे हम लोग यूज इसको इस तरह से करते हैं कि टू वी कंपेयर कि हमारा जो स्टैंडर्ड जीन है उस जीन के हिसाब से हमारा ड्रग उस जीन को कितना अप रेगुलेट या डाउन रेगुलेट करता है. सो दिस इज द मेन, दिस इज द बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक which we use. So the first one, as I said, assessment of cell viability. So assessment, this is the graph. तो मैंने बताया था ना आपको, हम लोग बेसिकली सेल्स को ट्रीट करते हैं, ट्रीट करने के बाद उसके अंदर we stain it with this annexin and this PI. So PI staining basically we do to see whether how much of necrosis is there, and annexin 5 FITC dye जो होता है वो देखता है कि how much of apoptosis there, the live cells basically देखते हैं. तो अब ये क्वाड्रेंट अगर आप देखेंगे, इस क्वाड्रेंट को हम लोग 4 में डिवाइड किया है. तो हमारे जब जो फ्लो साइटोमीटर से जब हमारा रिजल्ट आता है, we get this actually in this form. So here these are live cells. This is early apoptosis. This quadrant is early apoptosis. This is late apoptosis, and this is dead or necrosis. So this is a normal. This is a control. Now see the doxorubicin. Doxorubicin में यहाँ पे it is going into early apoptosis. See, most of the cells, much of them are going here. Similarly, in Montana arnica mother tincture, see, it is going into early apoptosis and late also. Similarly, here in 6C, 30C, 200C. Now we come to the graphical representation. So in the graphical representation, you can see how much of cytotoxicity is there. How much of apoptosis is there. So we had calculated the early and late, and then we plotted into the graph. So this is the range compared to the solvent control. So the inference of this study was that arnica montana 6C and 200C displayed apoptosis in TNBCs, right? But you see here, this is very important. ये as a homeopath मेरे को बहुत ज़्यादा हमेशा 30C पे there is some difference from, this is what I observed, there is some difference from mother tincture 6C and 200C में जो भी result होगा उससे हट के 30C में होगा.
अब यहाँ पे ऑर्गेनोन आता है. We'll discuss. वो आप लोग मेरे साथ डिस्कस करेंगे तब बताऊंगी. We'll talk on this point. This is very interesting. Okay. Now we go to the next slide. So this is a clonogenic assay जो मैं आपको अभी बता रही थी कि clonogenic assay क्या होता है. See, these are the cells we seed. We had cells seeded 100, only 100 cell. We count 100 cell and we seeded. And after and then we drug it. मतलब we give the medicine and then we remove the medicine and we keep it for 10 days after that. फिर हम देखते हैं कि वो सेल्स ग्रो करता है कि नहीं कॉलोनीज पे. फिर वो कॉलोनीज को स्टेन करके, ये माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हो, ये स्टेनिंग के बाद है, ये क्रिस्टल वायलेट स्टेनिंग है. आप इसमें देख सकते हो सी सॉल्वेंट कंट्रोल में सी देयर आर सो मेनी डॉट्स. दैट मींस देयर आर सो मेनी कॉलोनीज where there is no treatment. See, in doxorubicin there are very less, only few. And mother tincture 1 2 3, you can count 4, only 4. In 6C there are colonies but lesser. 30C में भी colony है, 200 में भी colony, but not as good as solvent control. ठीक है. So here is the graphical representation. So the number of cell, this graph actually tells you how much of the cells are inhibited. So here you can see there is so much of inhibition. ठीक. So Arnica could inhibit also the TNBC proliferation in vitro. So this was the second assay. Then the migration. So in the migration, what we do? Yes. ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी. ये हम लोग क्या करते हैं, पेट्री डिश में जब हम सेल सीड करते हैं, सेल सीड करने के बाद वी स्क्रैच इट विद द टिप. 200 माइक्रोलीटर के पतले पतले टिप्स आते, वी स्क्रैच इट. स्क्रैच करने से क्या हुआ, यहाँ सेल्स रह गए, यहाँ सेल्स रह गए, बीच का खाली हो गया, तो सेल फ्री एरिया हो गया. And then we watch, then we give our medicines, and then then we see whether there is migration of the cells. Okay. So now this I wanted to show. Now you see, this is how, this is not my work. This is taken from the Courtesy Biotech. ये एक वेबसाइट से मैंने देखा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि सेल्स कैसे माइग्रेट करते हैं. ये देखो, this goes. This is how, this is a time lapse microscopy. जहाँ पे this microscope record all the photographs for how many hours you want to keep it is kept. Again, I just show you. See, this is the scratch, and after some time, the scratch closes in cases of cell migration. ठीक? So this is the process. So I come back here. See here, this is my result. So doxorubicin, it could migrate 50% migration, but mother tincture had very less migration. 6C also had, 30 also, 200 also. But now we come to what happens. See. So this is my dish. I had made a scratch here, here, here. So this is 0 hour study जहाँ पे हमने फोटोग्राफ लिया था 0 hour में. Cells already थे, बीच में से स्क्रैच कर दिया, ये सेल फ्री एरिया हो गया. सो दिस इज अ कंट्रोल 0 hour. 48 hours बाद देखो ये, दिस हैज ग्रोन. दिस इज अ सेल फ्री एरिया, एंड इन 5FU दिस हैज ग्रोन इतना. मदर टिंचर में देखो, दिस हैज गॉन वेरी लेस. सो नाउ वी कैलकुलेट द सेल फ्री एरिया in comparison to the scratch area. And ये जो हमने आपको ग्राफ आपको दिखाया, this graph is made after calculating. ठीक है? The same thing in case of 6C, 30C and 200C. See the gap. It could resist the gap migration. Now we come to the real time results. जो मैं gene level पे gene expression studies जो मैं आपको बता रही थी. So basically these are all graphical representation. You will understand. So अगर आपको apoptosis पता है, तो apoptosis के 2 gene होते हैं. One is pro-apoptotic gene, that is BAX. This is BAX, and anti-apoptotic gene, which is BCL2. So basically
अपोप्टोसिस होने के लिए बैक्स को हाई जाना पड़ेगा, अप रेगुलेट होना चाहिए जीन, और BCL2 को डाउन रेगुलेट होना चाहिए, या बैक्स एंड BCL2 रेशियो को ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे मदर टिंचर के केस में यू कैन सी हाई द अप रेगुलेशन ऑफ, सी दिस इज सॉल्वेंट कंट्रोल, इसको हमें नॉर्मलाइज रखना पड़ता है, सो वी कंपेयर विद द सॉल्वेंट कंट्रोल, सो दिस इज ऑलवेज 1, इट इज गोइंग अबव, सो बैक्स जीन बैक्स जो है इट इज अप रेगुलेटेड, BCL2 is down regulated, and BAX BCL2 ratio is so high, so 2.5 fold higher fold change हो जाता है. Then we come to the second gene, that is the caspase 9. Caspase 9 is indicator कि वो intrinsic मतलब mitochondria mediated apoptosis कर रहा है. So now here also you see it is going up, that is upregulated in case of mother tincture. Caspase 3 is the effector caspase, that means it has actually there is actually apoptosis, for that we see caspase 3. So here also mother tincture is having caspase 3. So this is for apoptosis. Now we go to the anti-EMT, जो epithelial mesenchymal transition वाला property है, उस पे जाते हैं. So this is E-cadherin. मैंने उस diagram में जो पहले दिखाया था. So E-cadherin should be higher in cancer cell to prevent mesenchymal transition. So हमारे drug मतलब mother tincture क्या किया, it is showing a upward trend. ठीक है, up regulate कर रहा है. Similarly, N-cadherin and Vimentin are mesenchymal marker, gene marker. वो देखो down regulate हो रहा है. Similarly, the other drugs, 6C, 30C, 200C, all. ठीक है, हमारे यहाँ पे ये nothing significant आ रहा है because the bar is higher, because real time करते हो ना, results vary होता है, but then also the BAX BCL2 ratio is very high, that means again this is apoptosis because caspase 9 भी upregulate हो रहा है, 3 भी upregulate हो रहा है, E-cadherin भी upregulate हो रहा है. So basically we can say there is anti-EMT property of arnica and also there is apoptosis. So this is in the gene level. So I already said that upregulation of pro-apoptotic gene BAX and downregulation of anti-apoptotic gene BCL2 are critical markers of apoptosis mediated via mitochondria. An increase in the BAX BCL2 expression ratio is associated with the induction of apoptosis in several cancers. So arnica displayed apoptosis via intrinsic pathway, that is mitochondrial pathway. एक होता है extrinsic pathway जहाँ पे caspase 8 बढ़ता, वो inflammatory pathway होता. ठीक है, it showed upregulation of initiator caspase 9 and effector caspase 3. So अगर हम लोग इसको gist बनाएं, so this is the mitochondria. यहाँ पे हम लोग का एक वो प्रोटीन ये रिलीज होता है cytochrome C, that gets released when BAX is high and BCL2 is less. Then the caspase 9 initiator caspase is comes into scene. Pro caspase 9 से caspase होता है basically, and then caspase 3 effector caspase है, and that causes apoptosis. So this is the molecular mechanism जो हम लोग बात करते हैं ना. आप मेरे वेब उसमें फेसबुक पेज में देखे होंगे molecular homeopathy. So this is how we can describe about the molecules, and ये तो gene expression है. My next study which is going to come up is in the protein level. We can also, why protein, because हम लोग पहले देखते हैं कि gene level पे काम हो रहा है कि नहीं, translate, फिर वो translate हो रहा है कि नहीं protein पे, तभी जाके पता चलेगा yes this is working. So next is the protein work, but यहाँ अभी नहीं discuss कर रहा. So Arnica montana showed significant upregulation of E-cadherin, an epithelial marker which maintains the cell-cell adhesion and therefore integrity of the epithelial tissue. Again, मैं उसको दिखा चुकी थी diagram में. This means that the TNBC cells retain epithelial phenotype after treatment. Downregulation of mesenchymal markers like N-cadherin and Vimentin signifies inhibition of cell motility and migration after the treatment of cancer. Again, back to this. So if we can stop this process,
half work is done. So the conclusion is Arnica montana in various potencies displayed inhibitory effect on migration and proliferation attributed to anti-EMT. EMT means epithelial to mesenchymal transition under in vitro condition. It also displayed cytotoxicity by inducing apoptosis via permeabilization of माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, जिसमें मैंने अभी दिखाया था साइटोक्रोम सी निकलता है, परमिलाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया. तो these results lay down the foundation for future studies in animal model to elucidate its potential therapeutic role in TNPC. So these are the reference of what I said. So courage doesn't always roar. Sometimes courage is the little voice at the end of the day that says, I'll try again tomorrow. इसका बोलने का मतलब ये है कि ये जो भी आप रिजल्ट्स देख रहे हो, बहुत बार नहीं आने के बाद जो रोज रिजल्ट आज नहीं आया, फिर से करो. एक स्टडी जो करना पड़ता है ना, उसका it takes weeks, months to get down with these work. So success comes after. मतलब graphical representation बहुत easy है दिखाना, but यहाँ तक लाना बहुत difficult होता है. So थोड़ा ज़्यादा, I hope ज़्यादा complicated नहीं हो गया. Thank you, ma'am. It was a really wonderful session. I hope everybody understood and appreciated what I actually meant to say. I don't want to, I mean, मैंने बहुत basic तरीके से बात हुई, because if you always scientific language are not palatable to everybody. मेरे को भी नहीं समझ आता था, मेरे को बहुत पढ़ के समझ आया. So but I just want कि that language should go to the physicians. इसीलिए तो ये काम है ना, that so that you know how your drugs are actually working. You don't have to come to the lab and work every time, but you should be knowing how to work. So now Right. you know that Arnica is anti-inflammatory, but which pathway it is doing apoptosis to what you say, breast cancer cells, and there are two types of breast cancers. Mainly classically hormone dependent, hormone independent. So Arnica works in both. Right, ma'am. So for that only, I'll like to invite questions from our learners. We are going live on Facebook too. So if anybody has any questions, they can please write in the chat box on Zoom and in the comment section on Facebook. And for the same, I'll request our HR website, Dr. Richa, to please raise the questions to our speaker. Yes, good evening all. And ma'am, it was very good session. And the questions from Harinath, why Arnica and why not Phytolacca in your first paper? As I already mentioned, there are a huge number of medicine हमारे homeopathy में, all barren area. I chose Arnica because in my clinical practice, I was already getting results, because I already mentioned it is anti-inflammatory and cancer has a basic background of chronic inflammation. So that was my choice. That was how I was practicing, and I wanted to know how it works. That's why Arnica. There are Phytolacca, there are many other medicines. As I said, there are many other medicines which is coming up in my work. Until unless I publish, I cannot express those results. These were already talked into conferences, so I presented these works. I have 2 more drugs which I'd worked for in my thesis. But I tell you, those specific medicine जो हम लोग specific करते हैं, वहाँ पे अगर homeopathic point of view से I had picked up some medicines which are specific, they did not give that much results which my Arnica gave, and one other that gave. So again, homeopathy, organon, Hahnemann. Okay. Specific does work. फिर वहाँ पे मैं अगर कभी मौका लगे, मैं एक पेपर प्रेजेंट करूंगी. उसमें पेपर मतलब ऐसे ही मेरे अगर प्रेजेंटेशन हो जाने के बाद मैं आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी, बट वेरी इंटरेस्टिंग.
मैंने देखा है कुछ जैसे जो स्पेसिफिक है, जैसे आप फाइटोलॉग का बता रहे हो, तो मैं जो स्पेसिफिक मेडिसिन ली हूँ उसका 6 पोटेंसी बहुत अच्छा काम करता है, उसके 3200 नहीं करता है। फिर बहुत सारे में देखा है जैसे आर्निका में 200 में वो बिकम साइटोटॉक्सिक, आई मीन not cytotoxic to the normal cells, not sorry, to the cancer cell it doesn't work so much, जहां मदर टिंचर से 30 तक काम करता है। उसका भी फिर अगर मैं होम्योपैथी, अगर मैं इसमें ऑर्गेनोन लाना नहीं चाह रही थी बट मैं ऑर्गेनोन ले आती हूँ, इस उसमें ये है कि हम लोग एफोरिज्म सॉरी केंट ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। केंट ऑब्जर्वेशन में बोलते हैं जब जहाँ पे डिजीज व्हाट इज द फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा बैड उसमें चला गया है, वहां पे अगर कोई हायर पोटेंसी देते हो तो पेशेंट एडवर्स इफेक्ट आता है या पेशेंट डाई। तो वहां पे मैंने टीएनबीसी में देखा, टीएनबीसी जैसे मैंने बताया दिस इज एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर, वहां पे अगर 200 यूज कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली गिविंग ऑल्टरनेटिव रिजल्ट। बट वहां पे मदर टिंचर तो चलो वी आर टेकिंग इट जस्ट टू मेक द साइंस अप्रोप्रिएट, बट अदरवाइज 630 पे काम करता है बट नॉट 200। So there are many nitty-gritty we can discuss, सारा दिन भी discuss करेंगे खत्म नहीं। But my point, as you asked, why not Phytolog का? Phytolog का also we can try out, but Phytolog का I think there are many studies. If you go to the internet, there are many studies where Phytolog का has been used by other scientists. They also have results, but I did not use. Okay, ma'am. Next question is, does genesis of cancer cells, shape, size, proliferation rate, and malevolence depends on constitution of the patient? Please repeat. Does genesis of cancer cells, shape, size, proliferation rate, and malevolence depends on constitution of the patient? It might, because it's not actually constitution of the patient. I guess it depends upon the miasm of the patient. ठीक है, and obviously the genetic makeup. अगर किसी के यहाँ पे as you know breast cancer cells they run in gene also, जैसे ब्राका जीन है, आपने एंजेलिना जोली वाला कहानी अगर किस्सा अगर सुना है, she came to know after doing gene analysis that she will develop breast cancer because she has high level of BRCA gene. So that's why she had undergone mastectomy. Prior to that cancer नहीं था, फिर भी कर लिया. So some breast cancers run in the gene, but otherwise basically आपके अगर होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे हिसाब से इट शुड बी माइजम, कि कौन से तरह का ब्रेस्ट कैंसर होगा. Okay, ma'am. And next question is, how many diseases will be treated by Arnika? इंडिकेशंस जो भी अगर इंडिकेशन देखो, इंडिकेशन इज अगेन clinical indication, pathological indication, there can be many. Indication if it is there, similarity, homeopathy means similarity. आप यहाँ से यहाँ मिलाओ, homeopathy में काम करेगा. So you can make similarity in any level. Okay, ma'am. Next question is, can Arnika treat every type of cancer? As I said, if you say every type of cancer, maybe yes. Why? Because Arnika is an anti-inflammatory medicine, and all type of cancers basically has a background. Agar pathology dekhoge, they have a chronic inflammation. So they can treat, and I also guess it can prevent. Okay, ma'am. Next question is given Arnika in mother tincture through oral route shows same results as there are in lab dish results? Yes, I use the same drug as I purchased from the store. I use the same drug. वही डालते हैं. बस हमें, as I said, I have to know what is the concentration of alcohol that should be given to the cancer cell so that the cancer cell don't die of alcohol. So we have to calculate that we had done. We had standardized, and we follow that protocol. And many other studies, they will say no, the alcohol is killing because their way of standardization is different. But our way of, in our lab, we have standardized that this much of alcohol
is important. If you go more than this, if you put more microliter of drug into the dish, then that will definitely kill. So then that will not be the proper result. So that we had standardized. Okay, ma'am. And in your first paper, how much is the sample size? These are all in vitro studies. We don't do sample size this is not a patient related study. So here standard is you have to do the experiment thrice. So biological replicates and physical replicates, we do it thrice. N is equal to 3. At times we had done N is to 5 also, not necessarily always 3. So it has been repeated 3 times or repeated 5 times. For one, we don't always give results for one experiment, because if you see all the graphs as standard deviations, that means that there are more than one experiments and no patients were involved. Okay, ma'am. Next question is, does it mean arnica mother tincture works well compared to above 12C potency? See, as I mentioned, arnica mother tincture was taken into consideration in our study because you have to first show that something is working. So that was my intention. My intention was not to show that mother tincture works. My intention was to show to science that mother tincture works, and equally similar pattern, the higher dilution 630, 200 is also working. That was my intention, but not necessary. But I don't give mother tincture to my patient. Okay, ma'am. Next question is what is the role of arnica for lymphocytes in breast carcinoma? Breast carcinoma lymphocytes. Yes, I don't understand this question. I think the question needs some rectification. Okay, ma'am. Yes. You have to refine the question, because this is, I don't find any link in it. Okay, somebody I can see, somebody has written, but the medicine is depending on the sign and symptom of the patient. Definitely. See, in vitro studies, as I said, we are finding out the molecular, cellular and molecular mechanism of our drug. In in vitro study or in vivo study, in animal model or in cell culture model. Here, nothing to do with the patient. Definitely in homeopathy, when you clinically prescribe, that has to be always depending upon the sign and symptom. But at the same time, you also have to know the pathology. Kaha pathology? Because we are talking about cancer here, right? So cancer as such, agar aap organon ke hisab se agar aap cancer ko padhoge, it is an incurable disease. Organon में Hahnemann ने बोला है, अगर incurable disease है, you should be considering pathology as well as many other aspects. So I will always suggest, please go with the signs and symptom of the patient. These studies only represent the molecular mechanism, how your medicine, if somebody asks you how your cancer, how your arnica is working in your breast cancer, you can answer this, that it is working in this mitochondrial pathway and it is resisting the EMT. So you can talk like this. So this is how it should be. Ma'am, next question is, arnica is specific for which type of cancer? It is not specific for any cancer. It is only a specific pathology which I am talking about. Again, I mentioned that is inflammatory pathology. Okay, ma'am. These are the only questions so far. So it's important, if we discuss in these type of forum, that is important. You have to ask a lot of questions and you will have many queries, because obviously it is so much different for you. Same thing. 6 साल पहले मेरे लिए भी क्वेश्चन था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. So this is important. So the more we discuss, the more we come to know. But I would suggest you should be reading more of the scientific paper. The more you read scientific paper, you will come up with more questions. And these questions and inquisitiveness are important to bring up more questions and always, obviously, to work
Thank you so much, ma'am. We have Dr. Ashok Medan with us from Switzerland, and he has raised his hand. I would request Dr. Ashok to please unmute yourself, and if possible, sir, please switch on your video too, and then go ahead. Dr. Sakshi. Hello. Hello. Dr. Sakshi, I need your permission of Dr. Deepak and others, that I want to make a question to Dr. Basu, that my question could be a little bit could be a little bit longer, but my main question is for the mother tincture. Could I make it, even if it's a little longer? Sure. But it would be, yes, you can. Please. Okay. The question basic question is question of action of mother tinctures. That certainly I use. And I appreciate all your very sophisticated and scientific programs about molecules, about arnica especially. Everything is nice, but I have to reduce my situations of my questions about the action of this mother tinctures or arnica or any other mother tinctures. I want to bring to your attention to the cancer, if it's a cancer to the breast, if it is a cancer to the prostate, or if it is cancer to the other organs. In case we find, suppose we take first example of prostate, that maybe the main constitutional remedy would come out lycopodium. But if we go to the organ therapy, that we take it sabolsaralutta in case of mother tinctures, that I will come back to this situation, that a mother tincture of and the lycopodium. Then we come back again to the others, but main you are talking about breast cancer. Breast tumor, that 2 years back, example, 2 years back, we have known that the lady had an accident. She fell down by the bike or this and that, she had a tumor. But after 2 years, when she came after many treatments to a homeopath, then we go through that we have known now that it was an accident. Is accident either it is conium or it is because of the hardness of this tumor might be this Calcarea florica or something like that, any of the medicines. But along with this fantastic remedy is arnica. Arnica may be given on the first instant as a remedy, or we go, if it is choiced the conium, then we can add to a mother tincture of arnica. Now arnica as a organ therapy, inflammation, everything, and the situations to reduce the pain and inflammation of the breast, you know. So this mother tincture is acting to the molecules, as you are talking about radiotherapy and chemotherapy, it goes directly and spoiling all these normal and the other cells also. But the action of mother tincture, or 3, or 6, or 30, as you told about this 30 may having a better. So where I will find the right way, looking at the real action of the mother tincture directly as a organ therapy, or I should use 3, or I should use 6, or I should use 30. But the main remedy remains about the conium example. Please try to bring me to the action of this mother tincture. I hope I was able. मैं आपको हिंदी में बताऊं, मैं तुच्छ हूं, आप जैसा बहुत बड़ा नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए ये समझना actions of the remedy might be better because of this cancer programs. अगर मैं एक कैंसर मरीज को ठीक करना चाहता हूं, तो मुझे इस बात की डिटेल्ड पता होना चाहिए कि कौन सा क्या कब देना है, किसका रिएक्शन कब होगा. प्लीज डू दैट. सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ऑर्गन रेमेडी आप बता रहे, आई जस्ट टॉक अबाउट, जस्ट अ सेकंड. मैं उम्मीद करूं कि मैं आपको अपना प्रश्न समझा पाया हूं.
सर मैं क्वेश्चन समझ गई हूँ, मैं आपको उसका जवाब दे रही हूँ. सो बेसिकली एज आई इन ऑल माई स्टडीज आई हैड ओनली, मैं क्यों मदर टिंचर यूज की हूँ मैंने आपको बताया. बट अगर क्लिनिकली अगर बोलेंगे, मैं कभी भी मदर टिंचर आज तक कभी भी कोई भी केस में यूजुअली यूज नहीं करती हूँ until and unless it is indicated, like सपोज सिर्फ एक्सटर्नल इंजुरी के लिए, सॉरी क्लीनिंग पर्पस पे मैं मदर टिंचर कैलेंडुला यूज करती हूँ, दैट्स इट. या कभी हाइपरिकम के लिए, क्लीनिंग के लिए, बेड सोर में यूज करती हूँ, दैट्स इट. आई नेवर यूज मदर टिंचर क्लिनिकली, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. सो आई विल नेवर से कि हाँ आप मदर टिंचर प्रिस्क्राइब करो, ठीक. बिकॉज अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिकल उसमें जाओ तो मदर टिंचर इज एक्चुअली नॉट होम्योपैथिक मेडिसिन, द डाइल्यूशंस आर बेसिकली होम्योपैथिक. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्वेश्चन है, तो मदर टिंचर क्लिनिकली यूज में आई विल नेवर से कि यू यूज मदर टिंचर, बिकॉज आई डोंट यूज. इफ समबडी यूज एंड गेट रिजल्ट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सेकेंड जो आपका क्वेश्चन था कि कोनियम और आर्निका का, I'll give you a basic difference. सर ये घूम फिर के अल्टीमेटली पैथोलॉजी पे आता है. अगर ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा के बाद एक इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग आया है, देन इट इज आर्निका. अगर ट्रॉमा हुआ है उसके बाद अगर ग्रैन्युलेशन टिश्यू तैयार हो रहा है, देन इट इज कोनियम. दैट्स द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस. इसके ऊपर मैं अपना एक केस बता सकती हूँ. एक पेशेंट थी, उसको शी हैड ड्रॉर के बीच में शी हैड अ ट्रॉमा ऑन हर ब्रेस्ट एंड शी डेवलप्ड अ लंप ओवर देयर. जो वो सर्जन के पास गई एंड शी वाज प्रिस्क्राइब्ड, आई मीन शी हैड टू अंडरगो सर्जरी एंड ऑल. बोल दिया था डॉक्टर. मैं तब सिर्फ 3rd ईयर में थी सर, मैं तब सर्जरी पढ़ ही रही थी. तो उस टाइम ऐसे ही हमारे कोनियम और उस टाइम हमारे सिलेबस में कोनियम था. तो हमारे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, आई एम फ्रॉम कैलकाटा, सो वहाँ खूब सारे मेडिसिन डिस्कस होता था. ये होने से ये होने से ये होने से ये. तो तब नया नया कोनियम होता, ट्रॉमा के बाद ट्यूमर डेवलप होता कोनियम. So I discussed this and this lady, she was my known. तो मैंने बोला यार इसको कोनियम देना है, क्या देना है? And then I said no, this is not कोनियम. That was the basic difference. I gave arnica, the swelling subsided. Just because it was just an inflammation and inflammatory swelling, इसीलिए आर्निका काम किया. अगर ये क्रॉनिक होता, ट्रॉमा होता, उसमें ग्रैनुलेशन इश्यू होता, वहां कोनियम हो जाता. So again, this is only a difference of pathology where medicine selection helps. इन केसेस ऑफ एक्यूट, ऑब्वियसली ये जो आप ये बता रहे. और बाकी जो आपने बताया कि इन केसेस ऑफ क्या बोलते हैं cancers, if a lady had undergone trauma, an accident, and then she developed a cancer after a long time. So again it depends. बहुत सारे और सिम्टम होते हैं जिसमें, जैसे हमारे यहाँ कोई डॉक्टर साहब है, we find on the sign and symptom. Again you see sign and symptom. अगर if it is arnica indicated, definitely arnica will work. But if it is conium indicated, then again conium will work. So this is only the difference, pathological difference, जहाँ पे हम लोग इस पे बात कर सकते हैं. Hope I cleared your doubt. Very clear. Thank you very much. But I appreciate your work. Definitely. आप कलकत्ता से हैं तो आपको कलकत्ता वाली remedies, they are the most popular and efficient doctors from Calcutta, as our Dr. Sarkar and others are there. And thank you very much, Doctor. I hope that I'll be listening next time for other programs. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Do we have any more questions? It was really a very nice lecture, ma'am. Now I would like to request our patron sir, Dr. VP Singh sir, please कुछ आज के lecture के बारे में अपने views बताएं. Thank you, Dr. Sakshi Gupta. First of all, I would like to thank to our DHMA team led by our president, Dr. Smita Singh. They met us to such type of the learning speaker, Dr. Nilanjan Basu today. So today I am very happy, especially on my own
Today I am very happy because such type of lecture we have heard through DHMA and led by your President, Dr. Sweta Singh. Thank you, Dr. Sakshi, Dr. Nilanjana, or Dr. Sweta Singh. Thank you. Thank you, sir. Now I would request our President, Dr. Sweta Singh ma'am, to please share her views. Thank you, ma'am. Thank you for your insights on this topic. It was very enlightening and interesting. और जो होम्योपैथी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इस तरह से क्लियर करना, लाइक कि नॉर्मल पर ही काम करती है, नॉर्मल को अफेक्ट नहीं करेगी, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, प्लस मेडिसिन रियली वर्क्स, ऐसा नहीं है कि अल्कोहल ही है जो इस तरह के इफेक्ट्स दे रहा है। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आई रियली लव्ड योर सेशन। आई होप एवरीबडी डू। एंड आई बिलीव जो क्वेश्चंस रेज होते आ रहे हैं होम्योपैथी की तरफ, जो उंगलियां उठती आ रही हैं, तो इस तरह की जो स्टडीज हैं, इस तरह की जो काम है जो आप लोग कर रहे हैं, सो we will be able to give answers to them. So more power to you, ma'am. It was really a very wonderful lecture from your side. Thank you so much. Thank you, Dr. Shweta. Thank you, ma'am. Over to you, Sakshi. I seek your permission to share the certificate on your behalf and the association's behalf. Yes, you can do that. And we have Dr. Deepak also. I want he will also give his comments. डॉक्टर नीलांजना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जो टॉपिक है, जो डिस्कशन हुआ, उसका हमें इसी से पता लग गया कि लोगों ने क्वेश्चंस कितने पूछे हैं। तो जहाँ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं वहाँ टॉपिक्स पे डाउट होता है, वहाँ लेक्चर्स पे डाउट होता है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, उसी ने बताया कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है। 2014 में मैं एक पेपर प्रेजेंट कर रहा था चाइना के अंदर। वहाँ कुछ साइंटिस्ट थे जहाँ मैंने सब कुछ प्रेजेंट किया। उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने उनको एक जवाब दिया कि होम्योपैथी नीड ए साइंटिस्ट। तो आप उसमें सबसे आगे हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारा आप अच्छा सा काम कर रहे हैं, और जब तक साइंटिस्ट लोग प्रूव नहीं करते, मतलब अगर हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम क्रेब साइकिल पढ़ते हैं, हम उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो किसी फिजिशियन ने की हो, वो सारे काम साइंटिस्ट के होते हैं। साइंटिस्ट हमें जो कहते हैं वो हम करते हैं। फिजिशियन का रोल इतना है कि आपको एक डाटा कलेक्ट करके दे सकते हैं, कि मतलब हर एक फिजिशियन ये बता सकता है कि आर्निका का रोल कहाँ पर है। लेकिन फिजिशियन जब तक लेबोरेटरी नहीं मिलेगी, जब तक बहुत सारे काम नहीं होंगे, एक साइंटिस्ट नहीं बनेगा, तब तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। जहाँ तक साइंस की बात है, तो हमारे जो डॉक्टर हैनीमैन सर है या जितने भी स्टार वॉर्ड्स रहे हैं उस टाइम के, वो साइंस को ऑलरेडी बहुत पहले पीछे छोड़ चुके थे। वो उसी समय बता सके थे, और ये सक्षम थे कि जो फीवर है वो 4 बजे होगा तो ये मेडिसिन होगी, 2 बजे होगा तो ये मेडिसिन होगी, अगर गुस्से से फीवर आएगा तो ये मेडिसिन होगी। तो इससे बढ़िया और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कहाँ हो सकती है? बस हम लोग उसको साइंस के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि साइंस ने अपनी एक बाउंड्रीज बनाई है, साइंस ने अपने एक फॉर्मेट बनाए हैं। अगर वो फॉर्मेट में हम लोग फिट हो जाते हैं तो बस इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। और डॉक्टर नीलांजना मैम, आप बहुत अच्छे से उसको फिट करेंगे, मुझे पता है। अभी तो आपने सिर्फ एक आर्निका में शो किया है, मुझे लगता है कि आप और भी बहुत सारी स्टडीज कर रहे होंगी, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को आगे बढ़ाने में सक्षम है। और मुझे लगता है कि जो साइंस है फिर भी थोड़ी लिमिटेशन है। होम्योपैथी उससे बहुत कहीं आगे है, वो बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुकी है, उनके ऑर्गेनल में सब कुछ लिखा है। सोचिए, हम 6ठे एडिशन से आज, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब मैट्रिमेडिका है तो इसमें चेंजेस क्यों नहीं आए, या ऑर्गेनल में चेंजेस क्यों नहीं आए। मैं उसको सबको समझाता हूँ, चेंज करने की जरूरत कहाँ है? पहले जो है हम उसी को ही ठीक से समझ लें। तो चेंजेस तो हम उन चीजों में करते हैं जहाँ पे चेंज लाने की जरूरत हो। कोई चीज ऐसी मिलती नहीं जहाँ पे चेंज लाने की जरूरत है, तो हम कहाँ से चेंज करेंगे? तो थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा इंसाइट दिया होम्योपैथी पे। मैं आपको बहुत गुड विशेष देता हूँ पूरी टीम की तरफ से, पूरी डीएचएमए की तरफ से, कि आपका जो ये है वो बहुत जल्दी से पब्लिश हो, हम सब लोग उसको और अच्छे से पढ़ें और बहुत अच्छे से समझें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू so much. Thank you, sir. Now, on behalf of our president and the association, ma'am, this is a small gratitude. Kindly accept this from the association as a small gratitude, ma'am.
Thank you so much. Thank you so much, Dr. Sakshi, Dr. Shweta, and Dr. Deepak for this honor. And I'm really, I tell you, I'm really happy that I could share all my knowledge, whatever I have done. And I always love to share it with people who wants to listen. So this is really important for you as well as me. So thank you so much. Now I request our president to please, ma'am, give a vote of thanks. Thank you, Dr. Sakshi. And first of all, thanks to our honorable speaker for giving her precious time to our association on our platform. And I want to thank my executive team for their continuous support and selfless services with which we are able to continue our services towards the homeopathic world and these webinars for the keen learners of homeopathy. More beautiful. I want to thank our viewers and followers to join us today, and I hope the session are up to their expectations. And if they have any more suggestions or any session they are interested in, they can reach us to our WhatsApp number or they can email us. Dr. Sakshi will share the details. Thank you all for joining us today. Thank you, ma'am. And to the dear learners, please stay connected with us for more such informative sessions. And just to remind you, you may take membership and become an integral part of this family. For more details, you may please visit our website www.dhma.in, and for any queries or you wish to provide your feedback or any suggestions, please write to us at dhmadelhi@gmail.com. Thank you so much. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you so much. Thank you, ma'am.